बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर, और इंशाल्लाह हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. Power is defined as the rate of doing work. What does it mean? It means that how much work is done in how much time. तो पावर को हम एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, राइट? So it means that power is the dot product displacement by time, or displacement by time. You know that it is velocity. So product power को हम define कर सकते हैं in term of the dot product of force and velocity. So what does this equation mean? It means that a powerful will be both strong as well as fast. But remember that this is the average velocity, right? So it is the dot product of the force and velocity. The unit of power is watt. Watt is equal to if 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt. वाट को हम हायर अदर यूनिट में भी एक्सप्रेस करते हैं. सो 1 हार्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर, एंड 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 645 वाट. तो इसको हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रेज 550 पाउंड ऑफ मास टू अ हाइट ऑफ 1 feet, to a height of 1 feet for 1 second, right? So horsepower, the unit of power is watt. Watt is joule per second. Another unit is horsepower. Horsepower is equal to 746 watt. और अगर हम इसको दूसरे इसमें डिफाइन करें तो it is the power required to raise 550 pound of mass to a height of 1 feet for 1 second, right? तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. The dot product of the force and velocity. The dot product of the force and velocity is energy, impulse, power. So it is power. Power is defined as the rate of work done per unit time. Which relation describe it correctly? Power is equal to force by velocity. Power is equal to force into time. The power is equal to force by mass. Power is equal to, it is basically the product. यहाँ पे ये क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट है. So the power is equal to F dot V. जिस तरह मैंने इधर बताया कि it is the dot product of force and velocity. If a machine is doing 550 foot pound work in 1 second, its power will be how much? Its power will be 1 horsepower. जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1 horsepower is the power required to raise 550 pound of mass to a height of 1 feet for 1 second. और 1 horsepower बराबर है 746 watt के. So if a machine is doing 550 foot-pound work in 1 second, its power will be 746 watt or 1 horsepower. A crane moves an object of mass 5 kg vertically upward with the velocity, right? So assuming G is equal to the power of engine. So again हम power को, it is question number 36. Power को हम लिखते हैं in term of force and velocity. Power is the dot product of force. अब चूंकि क्या है कि a crane move an object of mass vertically upward. So if को हम replace करते हैं W से, and W is equal to
mg m हमारे पास क्या है, m is 550, sorry 50 kg, g is equal to 10, and velocity is also 10, so it is 50 multiplied by 100, so it is, sorry, 100, 5000 watt. तो इसको हम 5000 वाट भी लिख सकते हैं, या इसको हम 5 किलो वाट भी लिख सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज 5 किलो वाट. The power of an engine of a train moving with uniform velocity. The power of an engine of a train moving with uniform velocity under the action of constant force. तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. इट मीन जिस तरह पहले मैंने बताया कि अ पावरफुल इज बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फास्ट. सो द करेक्ट आंसर इज एफ डॉट डी. What is the magnitude of the force exerted by air on the plane? Magnitude of the force exerted, यानी इस क्वेश्चन में हमसे फोर्स के बारे में पूछे. if the power is 5 kilowatt are needed to maintain a constant speed. so हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पावर. पावर is how much, 500 kilowatt, और साथ में वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी इज 100 meter per second. So we know that P is equal to F dot V. So F is equal to P by V. P by V, right? So power is 502 10 raised to power 3 watt divide by 100. तो फोर्स कितनी है, 5 into 10 raised to power 3. तो इसको हम लिखते हैं 5000 न्यूटन. 5000 न्यूटन is the force required. So the correct answer is D. The dimensional formula of power is, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क का फॉर्मूला. पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम. और वर्क किस चीज के बराबर है, एफ डॉट डी बाय टाइम, और इसको हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू एम ए डी बाय टी. सो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है मास एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट अगेन एल डिवाइड बाय टाइम, राइट. तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3. एम एल स्क्वेयर टी माइनस 3 is the dimensional formula of power. So m l square, this is ml minus 1, l minus 2, l square t minus 3. So the correct expression is ml square t minus 3. If a machine does work at the rate of 20 joule per minute, 20 joule per minute, तो its power work किस हिसाब से, 240 joule per minute. तो अगर इसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 240 डिवाइड बाय 60, दिस इज joule per second. So its power will be, and this is question number 40, right? So power will be 4 watt. स्लाइड हम चेंज करते हैं. So the new slide,
क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है 4 वाट। तो द करेक्ट आंसर इज 4 watt, right? So the correct answer is 4 watt. A car of mass M has an engine which can deliver a power P. What is the minimum time in which a car can be accelerated from rest to a speed V? Right? So power को हम define करते हैं, power is equal to work by time. Work is equal to power into time. According to work energy theorem, work is equal to half mv square. तो अगर इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करें 1 and 2, it means that pt is equal to mv square by 2. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? What is the minimum time in which the car can be accelerated from rest to a speed? So the time is equal to t is equal to m square by 2p. So the correct answer is mv square by 2p. So this is the correct expression. Two boys having their weight in ratio 3/4. This 3/4 is the ratio of their weight go upstairs, taking time in the ratio. So this is the ratio of the weight. This is the ratio of the time. So the ratio of their power. So पहले हम calculate करते हैं boy 1 के लिए. P1 is the power of boy 1. So it is basically equal to F H by T. तो इसका जो F है basically this is weight और H दोनों के लिए constant है, raised to the same height upstairs. So F is the weight, so it is 3, and time is 4. So 3/4 into H. Similarly, the power of Y2 is its weight is 4 and the time it take is 3h. तो अगर हम P1 by P2 को कैलकुलेट करें तो it is 3/4h मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको आप तो वो करें तो ये भी बन जाएगा 4/3h. h के साथ कैंसिल, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 9/16. So the ratio of their power is 9/16. So the correct answer is 9/16. The average and the instantaneous power will be equal when the work, जिस तरह हमने acceleration और velocity में डिस्कस किया था कि the average and the instantaneous velocity is equal when the object is moving with uniform velocity. इसी तरह average and instantaneous power will be equal when the work is done at the uniform rate. At the uniform rate. A man with 50 Newton run up 50 stairs each of length in 10 seconds. His power is, अब हमसे power is equal to work by time. अब इसका F है और D कितना है? ये 50 stairs है, displacement by time. तो यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी है? 50 और मल्टीप्लाइड बाय 50 स्टेयर्स ये अप जाता है, और हर एक स्टेयर का जो वो है लेंथ है या हाइट है वो 0.2 है, राइट? इन हाउ मच टाइम? इन 10 सेकेंड्स. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका जो पावर है 50 and 50 multiplied by 2, it is 10 divided by 10. तो इसका जो पावर है वो है 50 वाट.
right? So the correct answer is 25 watt, 50, 100, 500. So the correct answer is 50 watt, जिस तरह हमने इधर कैलकुलेट किया क्वेश्चन नंबर 44 45. A man lift weight of 50 kg vertically 1 meter height in 10 seconds. A boy lift weight of 20 kg vertically to a height 1 meter higher in which of the following? तो इसमें हम पावर ऑफ द मैन कैलकुलेट करते हैं. पावर ऑफ द मैन कितने वेट को वो राइज करता है? 50 केजी को 50 केजी वेट को राइज करता है to the height of 1 meter, the height of 1 meter, right? In how much time? In 10 seconds. तो इसका जो पावर है वो है 5 वाट. अब पावर ऑफ द बॉय क्या है? पावर ऑफ द बॉय, बॉय क्या करता है? राइज करता है हाउ मच वेट को? 20 केजी वेट को 20 केजी वेट को वो ट्रांसफर करता राइज करता है 1 मीटर इन 2 सेकेंड्स. तो इसका जो पावर है वो है 10. इट मीन दैट बॉय इज man has a more power. Boy has a more power than man. Both have the same power. So the correct answer is boy has more power than man. A person is pulling upward a body of mass 16 kg. Body of mass 16 kg with a speed. So the power will be, so again, the power is equal to F dot V. क्योंकि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करे तो इसको हम लिखते हैं W डॉट V. W हमारे पास क्या है? W इज 16, राइट? 16 केजी है. अ मास ऑफ टू अ हाई, G हमारे पास क्या है? 10 है. और वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर है वो है 640 watt. So the correct answer is 640 watt. An object of mass m accelerate uniformly from rest to a speed v in time t second. The average power delivered. ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया था. क्वेश्चन नंबर 41 में हमने क्या किया कि पावर इज इक्वल टू W by T and work is equal to power into T. Or from work energy theorem we know that work is equal to half mv square. तो इसका मतलब है कि PT is equal to mv square by T. इसमें हमसे क्या पूछ? द एवरेज पावर. तो द एवरेज पावर P is equal to mv square by 2T. So the correct answer is mv square by 2T. तो ये जो क्वेश्चन थे ये सारे पावर के साथ रिलेटेड थे. पावर के साथ रिलेटेड हमने जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एनर्जी को. एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.